Bad debts. Dubat नहीं दुबत नहीं बैड डेब्ट्स। चलिए मेरी भी बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि आप किसी पार्टी से पैसा मांगते हैं, अपन किसी पार्टी से पैसा मांगते हैं और वो अब पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं, अब मेरी पोजीशन नहीं, उस व्यक्ति को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, और जो पैसा हमने रिकवर नहीं होने वाला उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है ना? क्लियर? When debtors is unable to pay any due amount, he has become insolvent, so the amount is not recovered, that amount will be called as a bad debts. कि व्यक्ति से जो पैसे मांग रहे हैं अब उसकी पोजीशन नहीं है पे करने की, और हमें अब ये लग रहा है कि पैसा रिकवर होने वाला नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बैड डेब्ट्स। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी अपने पास? There is no chances of recovery. There is no chances of recovery. Due amount from party. ठीक है कि पार्टी से पैसा रिकवर करने के चांसेस नहीं। ठीक है? It will be recorded as bad debts or loss in the books of accounts. कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भैया, बैड डेब्ट्स हो गया, हमें वो पैसा रिकवर होने के चांसेस। Bad debts may be full or partial. तो पूरा पैसा भी मिल सकता है और अधूरा पैसा भी मिल सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है? सबसे पहले यहां आ जाएगा आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है ना? being full amount bad। ठीक है? सेकंड में क्या आ सकता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है? पार्शियल अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है? और इधर आ जाएगा टोटल अमाउंट। क्लियर? या तो पूरा पैसा डूब गया या फिर कुछ पैसा ही डूबा और कुछ पैसा मिल गया। ठीक है? और थर्ड थिंग, रिकवर्ड बैड डेब्ट अमाउंट। कितनी बार क्या होता है, हमें लगता है इस व्यक्ति से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन गलती से किसी दिन हमारी किस्मत चमक जाती है और ये सब पैसा वो बंदा बोलता है सर आपके पैसे कितने ड्यू हैं, मैं अभी दे देता हूं। और हम कहेंगे बिल्कुल लक्ष्मी कौन मना करता है, हम यही बोलेंगे बेटर अब तो हमने मान लिया नहीं पैसा रिकवर अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेगा सर ले लो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप ले बढ़ा। तो कभी कभी जो पैसा हम मान लेते हैं वो पैसा भी हमें रिकवर हो जाएगा, जिसके हम लोग एंट्री बना सकते हैं कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। Clear? No. Goods used
for the purpose other than sales. Goods used for the purpose other than sales. खुद के लिए यूज किया मतलब यस, खुद के लिए भी हो सकता है, किसी को चैरिटी देना है उसके लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कुल मिला के सेल का पर्पस, माल यूज तो किया है लेकिन बेचने के पर्पस से किसी और पर्पस पे, जिसमें फर्स्ट में है अपना फॉर पर्सनल यूज, तो एंट्री बन जाएगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। Being goods used for personal use, ठीक है। या फिर हो गया किसी को अपने एज ए सैंपल बांटे, हमने किसी को एज ए सैंपल होते कितना कोई चीज बोलते ये यार एक छोटा अकाउंट से जाओ यूज करो, मुझे बताना फिर आप नया ले जाना। एज ए फ्री सैंपल अपने किसी को दिए तो आपकी एंट्री बनेगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, बीइंग goods used as free sample, क्लियर। या फिर किसी को दान में देने के लिए, क्लियर, फॉर चैरिटी पर्पस, और तो क्या आ जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, being goods used for ठीक है, क्लियर। नोट करो goods lost by fire और theft, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपका क्या यस, सबसे पहले गुड्स लॉस्ट और लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, तो एंट्री बनेगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। कितनी बार इंश्योरेंस क्लेम होता है तो वो क्लेम हम लोग करेंगे क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। क्लेम टू इंश्योरेंस कंपनी, तो यहां आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट एंड टू लॉस बाय थेफ्ट, क्लियर। अब क्लेम जब किया, क्लेम एक्सेप्ट हो गया, क्लियर, क्या हो गया, क्लेम एक्सेप्ट हो गया, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट कि अब आ रही है इंश्योरेंस कंपनी वाली, तो पहले तो क्लेम वाली,
हाँ बस वो क्लेम अपन ने कर दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलेगा ये दोनों? नहीं ये तो सही है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चीज आएगी, देखो यहाँ क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस क्लेम। इससे पहले मैं क्लेम था। क्लेम कर रहे हैं ना अपन, इंश्योरेंस क्लेम से आएगा। तभी मैं कह रहा हूँ यार दोनों डेबिट कैसे हो रहा है। ठीक क्लियर। नेक्स्ट अब आएगा आपके पास कि क्लेम एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट में लिखा हुआ है इन दोनों को अगर अपन मर्ज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मर्ज करने का मतलब क्लेम एंड एक्सेप्टेड दोनों एक साथ हो गया। कुछ नहीं, ये एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या एंट्री बन जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एंड टू लॉस बाय। ठीक है, ये एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट जो है वो पार्शियल क्लेम एक्सेप्टेड। पार्शियल क्लेम मैं थोड़ा अमाउंट हुआ। बिल्कुल, तो जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी, जितना नहीं हुआ है वो हो जाएगा पीनल और टू इंश्योरेंस क्लेम। पार्शियल है ना, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम्स लॉस। पार्शियल जो लॉस हो रहा है, पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट। ठीक है, और लास्ट में जाएगा क्लेम अमाउंट रिसीव्ड। क्लेम अमाउंट क्लेम अमाउंट, तो इंश्योरेंस क्लेम रेट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ये सब चीजें देखो, ये एक तरह से आपका डेटर्स हो गया कि हम उससे पैसा मिलने वाला, उसने क्लेम एक्सेप्ट किया है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर, पहले लॉस की एंट्री, फिर क्लेम करने की एंट्री, फिर क्लेम को एक्सेप्ट करने की एंट्री। अपन इन दोनों को एक एंट्री बनी थी, कंबाइंड एंट्री बनी थी। कुछ पैसा ही क्लेम हमारा एक्सेप्ट हुआ और फाइनली हमें पैसा क्लेम का मिल, तो ये एंट्री हमारी